Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and also continuing your studies. In last video, I have discussed two topics, that is greenhouse effect and ozone layer and its depletion. Now in this video, I will discuss one of the important natural resources, that is water. So let us start the class. So students, today I am going to discuss about one important natural resource, that is water. This water is an important inexhaustible natural resource. Means ये ऐसा एक natural resource है जो कभी खत्म नहीं होता. And major part of our earth is covered with water. It's around 71% of our earth's surface which is covered with water. And among all the available water, or among total available water on earth, 97.5% water is present in ocean. So you can say 97.5% water is salty, which is not in use, and 2.5% water is only fresh water, and among that 2.5% water, 1.9% water is present in frozen form in ice caps and glaciers in the poles. जो polar region है वहाँ पर जो 2.5% वाटर है उसमें से 1.9% वाटर फ्रोजन फॉर्म में है. मीन्स ये फ्रेश वाटर भी यूजेबल नहीं है. द ओनली यूजेबल फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर इज 0.6%. सो among 100% of water which is present on earth, only 0.6% water is being used by living organisms. And this water is a prime requirement, or you can say it is a primary requirement for the survival of all the living organisms present on earth. Why water is so necessary? The first reason is that all the cellular processes takes place in water medium. Means all the reactions that is taking place in our body, within our cell, is going on between those substances which used to get dissolved in water. Means all the chemical reactions is occurring between the two substances which first get dissolved and then after it take parts in chemical reaction. तो जो भी chemical reactions सेल के अंदर या बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो वाटर के प्रेजेंस में होते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस के बीच में हो रहे हैं जो पहले वाटर में डिसॉल्व होते हैं और उसके बाद रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. The second reason for the importance of water in living organisms' life is transportation. Means all the substances used to get transported with the help of water after getting dissolved in water. Body में बहुत सारे ऐसे substances हैं जो water में dissolve होने के बाद ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं. For example, for the excretion of the waste product, water is very much important because all the excretory waste used to first dissolve in water and after that it reaches to the excretory organ and then it is removed from the body. इसके अलावा जो और importance है water का ये कि living organisms used to maintain their body temperature with the help of water, because proper amount of water present in the body of living organism, either animals or plants, used to prevent the sudden temperature change in the body. Means अगर proper amount है water का body के अंदर तो जो sudden change होता है temperature का body का उसे वो रोक देता है. So body के temperature maintenance के लिए भी water बहुत important है. And for all these processes, organism need to maintain the level of water within their body. Body के अंदर organism को अपना water level maintain रखना पड़ता है. Terrestrial life forms जो होते हैं, means जो terrestrial organisms होते हैं, they cannot afford lots of salt in their body. अपने body के अंदर बहुत सारा salt वो store नहीं कर सकते, वो afford नहीं कर सकते. So they have to get rid of that excess salt. उस excess salt को उन्हें बाहर निकालना होता है. And for that, for removing that excess salt, terrestrial life forms require fresh water. Terrestrial organisms को fresh water की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. So this all processes occurs
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। अगर वाटर ना हो तो ये सारे जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, या सारे केमिकल रिएक्शंस है, या फिर बॉडी वाटर जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से नहीं होंगी। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. So students, up till we have discussed the utility or necessity of water at the individual level or in narrow sense, means how an organism uses water for carrying out various functions in its body to remain alive. But what is the necessity of water in broad sense? In broad sense, biodiversity of a particular area depends upon the availability of water in that area. means किसी भी एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिपेंड करती है कि वहाँ कितना अमाउंट वाटर का है. जहाँ भी वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी. मीन्स वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वो ज़्यादा होंगे. सपोज़ एक एरिया है एरिया 1 और दूसरा एरिया है एरिया 2. इन एरिया 1 वाटर इज़ मोर अवेलेबल, मीन्स वहाँ पर ज़्यादा वाटर है, और एरिया 2 में वाटर इज़ लेस अवेलेबल कंपेरेटिव टू एरिया 1. तो एरिया 1 में यू विल ऑब्जर्व दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ मोर, मीन्स वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ है वो ज़्यादा है कंपेरेटिव टू एरिया 2, क्योंकि यहाँ पे वाटर कम है. वाटर जो है इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, ऐसे तो बायोडाइवर्सिटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन मैनी अनदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉइल, बट water is one of the major resource which determines the biodiversity of particular area. So water is very much important for living organisms. Now next is water pollution. Water pollution is exactly the addition of unwanted material in water bodies which used to decrease the quality of water and which shows adverse effect or bad effect on the living organisms. मीन्स किसी भी तरह का अनवांटेड मटेरियल जो वाटर में ऐड कर रहे हैं गलती से या डेलिबरेटली, दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर पॉल्यूशन, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी ख़राब हो रही होती है. एंड द एजेंट्स विच कॉजेज वाटर पॉल्यूशन इज़ नोन एज पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर. नाउ व्हाट आर दी सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स? मीन्स ये वाटर पॉल्यूटेंट्स जो है वो आ कहाँ से रहे? द फर्स्ट water pollutant, that is fertilizers and pesticides, are coming from the agriculture field. The second water pollutant is sewage, means जो हमारे हाउस होल्ड के, जो किचन्स के, जो भी हमारे घरों से जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसे हम सीवेज कहते हैं. एंड दिस सीवेज इज कमिंग फ्रॉम आवर टाउन एंड सिटीज़. द अनदर पॉल्यूटेंट इज़ द वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़. जो फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, एंड दीज इंडस्ट्रीज यूज टू डंप these waste product in rivers or lakes. And you know, some specific industries use water to cool down their machines or use these water as a coolant in various operations, and later they used to release that warm water in various water bodies, and due to which the temperature, normal temperature of water bodies increases, and this also affects the living organism present in that water body. इसके अलावा अगर हम बात करें जो टेम्परेचर वेरी करता है किसी वाटर बॉडी का, तो उसका एक रीज़न है द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम्स. जो डैम्स बने होते हैं वहाँ से जब वाटर रिलीज़ हो रहा होता है दूसरी साइड, तो भी जो है वाटर का जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल जो डीप रिजर्वॉयर है, मीन्स डैम के एक साइड में जो वाटर है उस वहाँ पर जो वाटर है इट इज़ कूलर, वो क्या है, वो ठंडे हैं. बट द अनदर साइड ऑफ डैम कंटेन लेस वाटर, दैट्स वाई द वाटर प्रेजेंट देयर इज़ वार्मर. और इस तरीके से जो डैम के दोनों तरफ के जो वाटर हैं उन वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उस वाटर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अडेप्टेड होते हैं. एंड इफ़ सडनली वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम दी वन साइड, that from the cool side or from the reservoir side, then the living organism present on the another side of dam get affected from that temperature change. Okay, means you can see that balance of the temperature of water bodies
is very much important for the living organism or for the plants and animals which is present in that water body. Otherwise they will be affected, they will be badly affected with that temperature change. Now some more effects of water pollution is, the first one is it may cause various type of diseases in human beings. Like during water pollution, not only इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज टू कम इन दी वाटर बॉडी, जो सीवेज हमारे घरों से आ रहा है, तो सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो रहे हैं, एंड विद दैट लॉट्स ऑफ viruses or bacterias which may cause various diseases is also being mixed with the water bodies. So water pollution से बहुत सारे diseases भी हो सकते हैं, like cholera, टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया. तो इस तरह के सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं अगर किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग ने कोई पॉल्यूटेड वाटर जो है वो कंज्यूम किया, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं या वायरसेस या जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिक्स है पॉल्यूशन के वजह से. द सेकेंड इफेक्ट, अगर सेकेंड इफेक्ट की बात करें, वाटर पॉल्यूशन यूज टू रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट इन द वाटर. मीन्स जो भी ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इट इज़ बीइंग यूज बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग देयर, and due to the addition of organic waste products in the water body, this dissolved oxygen level used to decrease. जो dissolved oxygen level है वो water का low हो जाता है, जिसकी वजह से जो required amount है oxygen की, these plants and animals do not get the required amount of oxygen, and this badly affect them. Many times they used to die due to the lack of oxygen. And the third effect, as I have discussed about the change in temperature due to the mixing of warm water released from the industries. Due to the change in water, these aquatic organisms which are adapted to that particular temperature of water body may affect them badly. It may affect their breeding, means उनकी जो reproduction की जो कैपेबिलिटी है उस पर इफेक्ट कर सकते हैं. इवन these plants and animals may die due to the sudden change in temperature. So these were all the effects of water pollution. Student, this was all about water pollution and its effect. And that's all for this video. In next video, I will discuss about the another natural resource, that is soil. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.